Hey, I know you also want to do a stage anchoring in your upcoming functions in future. But the problem is that you have stage anchoring fear, you have public speaking fear, right? Because you avoid putting a lot of efforts in preparing your script. This is the right video where you have clicked and you will get all the solutions of your problem. Hey everyone, this is Santosh Shah and you're watching Learn English with Fun. In this video today, you will see how to invite some renowned people to the stage. कैसे हम किसी जाने माने हस्ती को अपने स्टेज के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, उनको इनविटेशन बता सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं इन इंग्लिश. जैसे कि रेनॉट पीपल में की बात करूं, जैसे आप स्कूल फंक्शन में हैं तो आपके लिए प्रिंसिपल, आपके लिए चीफ गेस्ट जो होंगे या आपके जो स्कूल के डायरेक्टर होंगे वो आपके लिए बहुत रेनॉट होंगे. या फिर आप किसी कंपनी में आप एज अ वर्कर काम कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, देयर यू विल सी द पीपल लाइक एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, और इवन द डायरेक्टर और सीईओ ऑफ द कंपनी और द एडमिन ऑफ द कंपनी. These are some good posts or some actually better posts in a company. So how to invite such people to the audience, to address the audience and to the stage. Let's see. Today in this video, I will give you some 5 beautiful phrases which are very much important and very much easier to speak and in pronunciation as it will be very comfortable for you to speak. पहले इसके पहले देख लीजिए, स्टेज एंकरिंग भी एक तरीके का पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट है, जहां पे आप देखते हैं आपके सामने हजारों की तादाद में ऑडियंस का आना होता है. ऑडियंस या फिर स्टूडेंट्स वहां पे बैठे होते हैं या आपके साथी, एम्प्लॉयज, आपके कलीग्स बैठे हुए होते हैं. तो ऑफ कोर्स दैट इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. पब्लिक स्पीकिंग में फियर बहुत ज्यादा हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ यू डोंट फोकस ऑन द स्क्रिप्ट. पहली बात तो जब आपको रैंडमली पिक किया जाता है तो ऑफ कोर्स बहुत सारे फियर हो सकता है आपके अंदर, और कभी कभार हम फियर इसलिए हम क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हम कभी कभार स्क्रिप्ट को अवॉइड कर देते हैं. यार क्या ही प्रिपेयर करना. But believe me friends, if you don't prepare and if you don't put your efforts in preparing your script, you will end up be ashamed at the stage. आप बिल्कुल शर्मिंदगी फेस करेंगे और कुछ नहीं मिलने वाला है. So make sure that whenever you go for a stage anchoring or whenever you go for a stage performance, of course you must put a lot of hard work in preparing your script, in preparing your performances, right? You should understand what the real concept is. चलिए आज इस पांचों beautiful phrases को ध्यान से देखते हैं. Please watch this video till the end and I am very damn sure that अगर आपने इस 5 phrases को यूज किया, क्योंकि ये 5 phrases आपको बहुत ultimately बहुत सारे options दे देंगे कि कैसे, किस तरीके, किस situations में आपको कौन सा phrase यूज करना है. चलिए without any further delay, let's get started this video. So in order to invite such prestigious people, you need prestigious English phrases also, right? So here I have mentioned 5 prestigious and very powerful phrases for you all, which you can use and add in your script to rock on that stage. Let's see the first phrase. पहला phrase देखते हैं. Our next speaker needs no introduction. Please welcome our esteemed dash. Dash की जगह पे आप जिसको invite कर रहे हैं उनको आप mention कर सकते हैं. To share valuable perspective. देखिए इसका मतलब समझिए. Esteemed का मतलब क्या होता है? Esteemed का मतलब होता है रेस्पेक्टिव, राइट? बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन, जो बहुत इज्जतदार, बहुत रेनॉन्ड पर्सन हो, उनके लिए हम एस्टीम को यूज कर सकते हैं, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि आप एमडी, डायरेक्टर या फिर अपने बहुत हायर पोजीशन वाले कोई नहीं आप एस्टीम को यूज करेंगे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. यू कैन मेंशन इट to somewhere who you feel that yes he is very popular or he is very respected person. Alright, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपको लाइन को रटनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका टोन बहुत ज्यादा पावरफुल होना चाहिए. Let's see how can you play with this powerful tone. The first phrase that we have is, so ladies and gentlemen, our next speaker needs no introduction. Please welcome our esteemed CEO of the company to share valuable perspective. I hope this is clear. How can you say this? Our next speaker needs no introduction because he is the CEO of our company. So please put your hands together for our esteemed CEO to share valuable perspective. Like this you have to share, right? बहुत powerful tone होनी चाहिए आपकी भी. Alright, this is done. The second phrase, and that is, ladies and gentlemen, put your hands together to welcome our esteemed, और dash के जगह पे फिर से आप अपने उस गेस्ट को, आप गेस्ट के नाम को आप मेंशन कर सकते हैं टू द स्टेज. देखिए पुट योर हैंड्स टुगेदर का मतलब क्या होता है कि आप अपने ऑडियंस को कह रहे हैं बड़ी जोरदार तालियों के स्वागत कीजिए हमारे नेक्स्ट आने वाले गेस्ट को. तो इसका ये मतलब होता है. देखिए अब इसको कैसे यूज करेंगे. So, hello ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome our esteemed CEO or director to the stage. Hello ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome our esteemed director of the company to the stage, right? इस तरीके से आप इस phrase को भी बहुत beautifully पेश कर सकते हैं. Next, ladies and gentlemen, please give a big round of applause to the driving force behind our success, our respected principal of the school.
नाम आप मेंशन कर सकते हैं इफ यू वांट। ऑलराइट, अब कैसे इसको मेंशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जब भी आप फ्रेज को यूज करें, आप क्लैपिंग अपनी पहले शुरू कर सकते हैं, राइट। दैट इज अ गुड ट्रिक टू प्ले विद योर ऑडियंस, राइट। आप जब खुद क्लैपिंग शुरू करते हैं तो आपकी ऑडियंस आपके साथ जुड़ते हैं और वो भी क्लैप करना शुरू कर सकते हैं, राइट। देयर आर बिग चांसेस। सो हाउ कैन यू से दिस लाइन? So, ladies and gentlemen, please give a big round of applause to the driving force behind our success, our respected principal, Mr. Jagdish Sharma. Please welcome. Right, like this, you can start clapping, and they will also come together and will start clapping with you. Right? इस तरीके से आप बोल सकते हैं. Next is इन सभी में भी आप वैसे ही कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome our esteemed CEO of the company to the stage. Please welcome. Right? यहाँ तक पहुंचे. Put your hands together to welcome our esteemed CEO of the company. Please put your hands together and give him a big round of applause. Right? जिस तरीके से, जिस pronunciation method से बता रहा हूँ, please उसको try करिए and see the difference. आप difference वहाँ पे आप check कर पाएंगे. All right. Next that we have is fourth phrase. That is, our event is truly honored by the presence of our dash. Dash means यहाँ पे आप उनका फिर से नाम mention करेंगे. So please welcome dash to the stage. ध्यान से सुनिएगा इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब समझिए, आवर इवेंट यानी कि हमारा जो इवेंट है, हमारा जो फंक्शन है, हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो हम बहुत खुश नसीब है कि आपकी मौजूदगी हमें देखने को मिली। तो प्लीज स्वागत कीजिए बहुत जोरदार तालियों से इनका, यानी कि जिनको भी आप वेलकम कर रहे हैं। तो देखिए जरा, आवर इवेंट इज ट्रूली ऑनर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ आवर एस्टीम्ड प्रिंसिपल, डायरेक्टर और चीफ गेस्ट ऑफ दिस स्कूल। सो प्लीज वेलकम आवर नेक्स्ट speaker, the director of our school. Please give him a big round of applause. Right? इस तरीके से आप अपनी बातों को express कर सकते हैं. I hope this is clear. The next and the last phrase that we have is, that is very simple, very ordinary and very beautiful as well. Let's see how. We invite the CEO or MD to join us in the spotlight for a brief address to our audience. ये बहुत fashionable है. जरा देखिए इसको कैसे यूज करेंगे। So now for the next speaker, we would like to invite the CEO or you can say MD. तो आप कैसे बोलेंगे? So for the next speaker, we would like to invite MD to join us in the spotlight for a brief address to our audience. कि वो आए और हमारे ऑडियंस के साथ कुछ अपनी बातों को शेयर करें, right? So this is how you will speak like a public speaker, right? You should be well confident, right? इस साइड पे आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना है। तो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक आपके लिए क्या हो सकती है कि जब भी आप इन फ्रेजेस को यूज करें, तो एज अ पब्लिक स्पीकर, एज अ स्टेज एंकर, आपको पहले अपनी इनिशिएट करनी है क्लैपिंग को, राइट? जैसे कि इसी को देख लीजिए। Our next speaker needs no introduction. Please welcome our esteemed CEO to share valuable perspective. Like this you can share, and like this you can start talking about all the things. I hope this is clear, and this video was requested by one of the subscribers of this channel named Ravindra, I guess. So thank you so much, Ravindra, for this beautiful comment, and I wish you all the best, that you must have got the answer what you wanted. Now I wish you all the best that you perform very well in your upcoming event. Thank you so much for joining us and watching this video till the end. Thank you so much. Bye bye, take care. We'll see you in the next class.